Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. How are you? Today, I am discuss with you introductions to educational research. What is search? रिसर्च जब हम ये देखते हैं कि एजुकेशनल रिसर्च क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर्च क्या है. उसके बाद हम रिसर्च करेंगे. What is search? Search is an act to find something which has lost before or missing. For examples, I am searching for my mobiles to explore through tribals and unfamiliar areas to find food. The bridge search of inserts to look for something for further studies or research. As an educationist, search for specific piece of search. राइट सबसे ये है कि जो चीज़ हमारी गुम हो चुकी है हम उसके बारे में तलाश करना वो हमारी सर्च होगी. अब हम ये देखेंगे रिसर्च क्या है. रिसर्च इट इज़ अ सिस्टमैटिक एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग and questioning into a specifics to improving, revive, fact, theory, and applications, etc. Characteristics of research work. Research work is usually based on following factors. Systematics consist of sequent procedural like first define the problems, then review the literatures, clarify the problems, develop instrument plans, collect data, and finally analyze data for revise fact etc. अब हम बात कर रहे हैं कि करेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च वर्क के कौन से होंगे. सबसे पहले हमने बात की है सिस्टमैटिक. ये कंसिस्ट होना चाहिए. फर्स्ट हमें सबसे पहले जो चीज़ मालूम हो वो ये है कि प्रॉब्लम्स क्या है. जो प्रॉब्लम हमारे पास एक आया उसका हमने लिटरेचर रिव्यू लेना है. बैकग्राउंड स्टडी से पता चलेगा कि कहाँ पे ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो सफ़र कर रहा है. उसको हम क्लैरिफाई करेंगे अपनी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम के ज़रिए से. स्टेटमेंट के प्रॉब्लम आ जाएगी, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन हो जाएंगे. जो हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे ऑब्जेक्टिव रेलिवेंट होंगे हमारी प्रॉब्लम से, जिसके लिए हम कह सकेंगे कि आफ्टर दिस स्टडीज we will be able to explore these problems, suggest these solutions. इसी तरह से जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होंगे उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे कि क्वेश्चनियर बनाएंगे. डेवलप इंस्ट्रूमेंट प्लान्स. हमारे पास एक प्लान होगा जिससे हम डाटा कलेक्शंस करेंगे. जो हमारे पास प्लान होगा यानी कि हमारा क्वेश्चनियर अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम कौन सा क्वेश्चनियर डिज़ाइन करेंगे. हमारे पास एक क्वेश्चनियर होगा, उन क्वेश्चनियर्स को लेके हम डाटा कलेक्ट करेंगे. सपोज हम स्टूडेंट्स और टीचर्स पे स्टडी कर रहे हैं, टीचर्स के बिहेवियर्स को देख रहे हैं. हमारे पास बिहेवियर है फिफ्थ क्लास का. हमें ये देखना है कि फिफ्थ क्लास में टीचर्स और स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप कैसा है. क्या आया उनके पास जो लेक्चर्स मेथड है वो ड्रेस मेथड है, वो एक्टिविटी बेस्ड मेथड है या ग्रुप स्टडी करवाई जा रही है. उसके लिए हम कुछ स्कूल्स को सिलेक्ट करेंगे. उन सिलेक्टेड स्कूल से हम डाटा कलेक्ट करेंगे. वो जो डाटा है हमारे पास वो थ्रू क्वेश्चनियर हो सकता है जिसमें हमारे पास वो लिक्विड स्केल बेस्ड होगा. लिक्विड स्केल में हमारे पास स्ट्रॉन्गली डिसएग्री से स्ट्रॉन्गली एग्री की तरफ जाएगा. और उसमें हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होंगे. वेरिएबल्स क्या हैं हमारे पास. जेंडर है, हमारी टीचिंग एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट्स की क्लास है, उनका फैमिली सेटअप्स है, स्कूल्स का लेवल है कि वो प्राइमरी है, एलिमेंट्री है, हायर सेकेंडरी है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है. ये सारे हमारे वेरिएबल्स होंगे.
جو ہمارے ویریبلس ہوں گے ان کی مدرس اینڈ فادرس اکانومک سچویشن ہو سکتی ہے، ان کی مدر اینڈ فادرس کی کوالیفکیشن ہو سکتی ہے، جسے ہم میئر کریں گے اور اس کو فائنلی انالائز کریں گے ڈیٹا کو فار ریویو فیکٹ اینڈ فائنڈنگ، نئے فیکٹ نئی فائنڈنگ کے ساتھ. اسی طرح سے جو ہمارے پاس نیکسٹ اس میں اب کلیئر ہوں گے کہ ہمارے پاس آبجیکٹیو ہے، آبجیکٹیو سے ریلیونٹ ہم نے کوشچن یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، پھر ڈیٹا کلیکشنس کرنی ہے، اینالائز کرنا ہے، دین نئی فائنڈنگ ہمارے پاس آ جائیں گی. Empirical research is about experimentations and observations of the theories. Alright, اب ہمارے پاس کچھ hypothesis characteristics ہیں ریسرچ ورک کے. It is made by guide the investigations process objectively. Finding the research should be based on empirical statistical method. This method can be used to get understanding from data. Assumptions. Sometimes assumptions are made to get certain facts. Examples. Let's take our earlier example as an educationist. Search for teaching methods to examine their behaviors, characteristics, or students' relationships in class, teacher-student relationships, student-to-student relationships. For this, his and her, which follow a systematic process of research to analyze information, to establish fact, and to arrive at new conclusions. رائٹ، اب ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ٹاپک تھا سرچ اور ریسرچ کے بارے میں، اس کو ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ سرچ کیا ہے، ریسرچ کیا ہے. سرچ اٹ از اے لک فار سم تھنگس اینڈ ریسرچ از لک انٹو اٹ. Research is normally done by expert. However, the search is made by everyone. اب یہ چیزیں ہیں کہ جو ریسرچ ہے وہ ایک ایکسپرٹ، جو فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوگا وہ کرے گا، جبکہ سرچ ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. رائٹ، اب ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹاپک ہے، 4 سیکشن ہے فار دس پریزنٹیشن کے ان اوور ویو آف دا سائنٹیفک میتھڈس اینڈ ایجوکیشنل ریسرچ. This classification of types of research by purpose, the classifications of types of research by methods, examples of research types. اب ہمارے پاس جو ہم نے میتھڈس دیکھنے ہیں، پرپس دیکھنی ہے، ریسرچ دیکھنی ہے، ہمارے پاس دیکھیں گے کہ وے آف نوئنگ. 5 ways we can knowing something: personal experience, traditions, experts and authorities, logic, inductive, deductive, scientific methods. کہ ہمارے پاس جو نالج آتا ہے پرسنل ایکسپیرئنس سے آتا ہے، ہماری روایات کے ذریعے آتا ہے، ایکسپرٹس کے ذریعے آتا ہے، کچھ لاجکس کے ذریعے ہمیں چیزیں پتہ چلتی ہیں. کہ لاجک کیا ہے، انڈکٹیو اور ڈیٹکٹیو، کہ ایزی سے مشکل کس طرف یا مشکل سے آسان کی طرف. سائنٹیفک جو چیزیں ہمیں پروو کرتی ہیں ہماری نالج میں گین ہوتا ہے. اب ہم ان کو فرسٹ سے 5 تک اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں گے، کچھ ان کی لمیٹیشنس کے ساتھ، کہ اگر پرسنل ایکسپیرئنس ہیں اس کے ساتھ کیا لمیٹیشنس ہیں، اگر ہمارے پاس ٹریڈیشنس ہیں ان کے ساتھ کیا لمیٹیشنس ہیں. کہ جس طرح سے یہ ہمارے پاس 5 ویوز آف نوئنگ ہیں، تو سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ لمیٹیشن کے ساتھ ہم موو کر رہے ہیں. وے آف نوئنگ: پرسنل ایکسپیرئنس relying on one knowledge for previous experience. یعنی کہ اس میں پی کے ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں، ہماری جو پریویس ایکسپیرئنس ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ لمیٹیشنس بھی ہیں. How one is affected by an event depends on who
one is. One frequently need to know something that cannot be learned through experience. इसी तरह से नेक्स्ट है traditions, doing something they have always been done. Limitations traditions are often based on idealized past traditions, can be distanced from the current realities and the complexity associations with them. Experts and authorities, relying on the experts and authorities to the others. Limitations and experts can disagree among themselves, and it is a second opinion. Experts can be wrong. Way of knowing inductive reasonings from the specific to journals, limitations. Its order to the certainty of the conclusions. One must observe all examples. All examples can be observed only in very limited situations, which there are few members of the groups. Deductive reasoning from general to specific limitations must be being with true premise in order to arrive at true conclusions. Deductive reasonings only organized what is already known. Scientific methods. The goal of scientific methods is to explain, predict, and control phenomena. राइट, जब भी हम साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं, इसकी प्रिडिक्शंस की बात करते हैं, तो हम पे कंट्रोल फिनोमिना की बात करते हैं. इट्स इन्वॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिंग्स ऑफ द थ्योरीज. यहाँ पे डेवलपमेंट होती है टेस्टिंग्स की, थ्योरीज की, एक्सपेरिमेंट किया जाता है. द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इज मोर efficient and reliable than any other source of knowledge. Scientific method, 5 steps in scientific method, recognitions and definitions of the problems, formulations of hypotheses, collections of data, analysis of data, and last conclusions, starting conclusions. यानी कि हमारे पास सबसे पहले क्या होंगे, डेफिनेशंस. हम डिफाइन करेंगे हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिर हमारे पास कुछ हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे कि आया ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है. उसके बाद हमारे पास कुछ डाटा कलेक्ट होगा. जब हम एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास डाटा की कलेक्शन आ जाएगी. उस कलेक्शंस को जब हमारे पास डिफरेंट टाइप का डाटा आ जाएगा, डिफरेंट ओपिनियन आ जाएंगे, हम उसको एनालाइज करेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ, किस पे एग्रीड है, किस पॉइंट पे वो सिग्निफिकेंट है, किस पे सिग्निफिकेंट नहीं है. इस तरह से हमारे पास एक नया कंक्लूजन ड्रॉ हो जाएगा. साइंटिफिक मेथड्स की जैसे कि पहले की कुछ लिमिटेशंस थी, अब इनकी भी लिमिटेशंस हैं. Inabilities to answer values-based questions involving should and abilities to capture a full in richness and complexity of the participants. Limitations of our measurement instruments, ethical and legal responsibilities. राइट, कुछ ऐसे बाकियों के साथ कुछ लिमिटेशंस हैं. इसके साथ भी लिमिटेशंस हैं कि हमारे पास कुछ एथिकल वैल्यूज होनी चाहिए, और हमारे पास जो लैब है वो प्रॉपर होनी चाहिए, और लैब के जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं या जो केमिकल हमारे पास यूज़ हैं वो एक्यूरेट रिजल्ट्स हम कर रहे हैं. अगर हम बिहेवियर्स का देखें, नहीं, जब भी हम एज एजुकेशनल स्टडी करेंगे तो एजुकेशनल स्टडी के लिए हम कभी भी ये नहीं है कि क्लासरूम हम पाकिस्तान का देख रहे हैं, चाइना का देख रहे हैं और कनाडा का देख रहे हैं या तुर्की का.
کہ ہمارے پاس وہاں پہ ہم یہ مد نظر رکھیں گے کہ وہاں پہ انوائرمنٹ کیسا ہے، کلاس رومس کا انوائرمنٹ کیسا ہے، فیملی بیک گراؤنڈ بچوں کا کیسا ہے. اگر آپ ادر کنٹریز میں نہ بھی جائیں، اگر ہمارے پاس ایجوکیشنسٹ ہم نے بات کرنی ہے، اسکولس کی بات کرنی ہے، ٹیچرس کی بات کرنی ہے، اسٹوڈنٹس کی بات کرنی ہے، تو ہمارے پاس ڈفرینٹ سیکٹرس میں ڈفرینٹ رزلٹس ہوں گے. پرائیویٹ سیکٹرس میں ٹیچرس اور اسٹوڈنٹس کی کوپریشن زیادہ پازیٹیو آپ کو نظر آئے گی. گورنمنٹ سیکٹر میں ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹس کے ریلیشنس میں کچھ بریک اپ نظر آئیں گے. اور اسی طرح سے میں نے اکثر یہ دیکھا ہے، اپنی پرسنل آبزرویشنس بھی ہیں، کہ مارننگ ایوننگ کے اسٹوڈنٹس کے رویے میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم یہ اسٹڈی کریں گے تو وہاں پہ ہمارے پاس کلینلی آبزرو کرنا ہے کہ اسٹوڈنٹس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، فیملی بیک گراؤنڈ، اسٹیٹس وائز، کہ ہم جس کا انالیسس کر رہے ہیں کہ وہ آیا اس کی لمیٹیشنس کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں. رائٹ. اب ہم نے بات کرنی ہے ایجوکیشنل ریسرچ کی. اب پہلے ہم نے بات کی ہے سرچ کیا ہے، ریسرچ کیا ہے، وے آف نوئنگ کیا ہے. اب ہمارے پاس ہے ایجوکیشنل ریسرچ. This applications of the scientific methods to the study educational problems. The goal is to explain, predict, and or control educational phenomena. Educational research steps for conducting educational research, selecting the problems, used to specific research procedures to design and collect data, analyzed of data, statements and conclusions based on the results of the data analysis. Educational research difficulty conducting educational research involve human being and then complexity associated with them, difficulty generalizing the specific studies problem when improving significant control to conduct research in educational settings, complications when observed in educational settings, inductive measurement to be observed, B studies. Classifications of research, two helpful way to view research by purpose, by methods. The degree to direct applicability of research to educational practice and the settings. Methods, the overall strategies followed to collect and analyze data. The purpose of research. اسٹوڈینٹس آپ کو کہیں پہ بھی کسی بھی پوائنٹس پہ کوئی ڈفیکلٹیز آئے تو آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ پوائنٹ آؤٹ کریں تو میں آپ کو اس ٹاپکس کو کلیئر کروا دوں گی. رائٹ. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پرپس آف ریسرچ کیا ہے. 5 کیٹیگریز ہیں: بیسک، اپلائڈ، ایویلیوشن، R&D, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، ایکشن ریسرچ. The purpose of research: basic research, collecting and analyzing of data to develop or enhance theories. Example related to learning theory, Piaget, constructivism, mistral learning, rendered multiple intelligence theories. The purpose of research: applied research. Applied research collects and analyzes of the data to examine the usefulness of the theories to solve practical educational problems. Example, developing a 7th grade social study curriculum around a problem solving approach to learning, examining the effectiveness of computer-based algebra program developed around of mystery of the learning approach, accommodations various learning style when teachings learn
to models lectures. The introductions, basics and applied research. Basic research provide theories that procedures the concept for solving educational problems, and applied research provide data to help support, guide, and revise the educational theories. Evaluation research. Third part of purpose of research, the collections of analyzing of the data to make decisions related to merits or worth of a specific programs, merits related to the program, accomplishing what it was supposed to accomplish, what related to the values attached to the program by those using it. Types of evaluation: फॉर्मेटिव evaluation, submissive evaluation. जब हमने evaluations की बात करनी है तो evaluation formative और summative. Formative में कौन सी आएंगी? सबसे पहले तो है placement evaluation, फिर हमारे पास आ जाएगी diagnose evaluations, देन आएगी फॉर्मेटिव evaluation, फिर होगी summative evaluation. फॉर्मेटिव evaluations में हम एज ए रिसर्च में कर रहे हैं तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवेल्यूशन. जबकि फॉर्मेटिव के स्टार्टिंग में सबसे पहले रिप्लेसमेंट, यानी कि हमारी प्लेसमेंट कैसे हुई, एडमिशन टेस्ट, हमारी प्लेसमेंट, डायग्नोज, जो हमारे डिफिकल्टीज आई उसको फाइंड आउट करना, उसको एवेल्यूएट करना, डायग्नोज एवेल्यूशन. Formative evaluation is designed to information to improve the program, what it is being do well or implemented. Summative evaluation is designed to make decisions regarding the overall quality of the program being evaluated. Evaluation research examples: the computerized algebra programs being used in William Middle School has been inserted properly is being used properly used students' achievement in increasing as a result of its use. The computerized algebra programs being used in university lab schools is perceived to be effective and efficient expenditures for the university's funds. Research and development. The development of effective product to use in schools. Examples: the development of the software to create computerized algebra program that incorporates an individual mystery learning approach to teach basic algebra concepts. The development of the smart boards to enhance the teachers to use technology in the classrooms. Research and development, this is examples. The purpose of research: action research. The collect and analyze the data to provide the solutions to the practical valued problems or educate within their own schools or organizations. For examples, how can our college move to perform based models to undergraduate teachers, participants, programs? Second, how can disciplinary policies be enforced consistency in our schools?
Research methods. Two generally categories of method current based being used: educational research, qualitative and quantitative. Okay, then qualitative रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव का कंपैरिजन हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या है। जर्नल पर्पस, assumptions of this research. Journal purpose: collect and analyze data to explain, predict, and control phenomena of interest, describe current conditions, investigate relationships, study case and effect। यानी कि कॉज एंड इफेक्ट की बात करेंगे तो क्वांटिटेटिव की बात होगी। assumptions of the studies: we live in suitable uniforms and coherent words. We can measure, understand and generalize about our words. Generally regarded positively. Perspective. Characteristics of quantitative research: numerical data used for formally stated hypotheses and procedures used to control to minimize the effects to factors that should interfere with the outcome of the research. Large numbers of participating subjects and objective detached researchers. Use of pencils and paper test, questionnaire, etc. This is the characteristics of quantitative research. Quantitative research basics: 5 design, descriptive, correlations, causal, comparative, experimental, single subjects। quantitative research design descriptive purpose क्या होगा? To describe the current situations of a variable to interest into the researchers. Example: how many students drop out of schools? What are the attitude of the parents, students, and teachers concerning an extended school years? What kind of activities typically occurs in these sixth grade arts classes and how frequently does each occurs? To what extent and elementary teachers using math manipulatives, correlations. To correlation research centers the extent to what to move more valuable and systematical related. What is the relationships between math scores and students' overall grades? It is the study series of efficacy related on his and her effectiveness. Thus, significant relationships existing between the type of activity using math classrooms and teachers' students' achievement. Quantitative design, casual comparative purpose: to explore relationships among variables that cannot be actively manipulated and controlled by the researchers. For examples:
What is the effect of part-time employments on the achievement of high school students? What characteristics differentiate students who drop out from those who did not? What is the effect of attending and magnet schools of students' attitudes? The important characteristics is an dependent variable has already been manipulated. Experimental research purpose. The purpose, cause and effect relationships between variables. Example, what is the effect of the teachers with a cooperative group strategies or traditional lectures approach of the students' achievement? What is the effective teachings which manipulating words is? Our traditional algorithms approach on students' test set scores. The important characteristics are that the researchers manipulate the independent variables and control extrinsic variables. Quantitative design single subject purpose to investigate cause and effect relationships with samples of one. For example, what is the cause of behavior modifications programs? What are the effect of the behavior learning programs? The important characteristics to use and specific interventions, the cause behavior change of low including populations, specific educations, quantitative methods, journal purpose of quantitative method to probe deep into the research settings to obtain in-depth understandings about the way things are, why they are like, through what, and how participants perceive them. The need to create us in-depth of context studies with a lot of researchers. They uncover stable less over personal understandings, assumptions of the research. All meaning is situations is a popular perspectives and context. Different peoples and the group often have different perspectives, contexts. There are many different meanings in the world. Generally related to a post-positivity perspective. Characteristics of qualitative research. There are no hypotheses guiding the researcher. Rather are generally issues known as a यहाँ पे ये चीज़ होगी कि हमारे पास जो इश्यूज होंगे वो स्टेटमेंट की फॉर्म में होंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में इश्यूज नहीं होंगे. सजेस्ट कि इश्यूज ऑफ द कंसर्न जर्नल इश्यूज कंसर्न्स होंगे. Problems of methods tend to evolve over the course by the study to understandings of the researcher, context, and participants depends. Phenomena are examined as these existing and natural contexts, and they are viewed from the participant perspectives. There are few participants involved in the studies. Data analysis is interpredictive in nature. The research interact
intrinsically and with the participant. Qualitative methods to basics design, narratively ethnography. Narratively purpose focused on the studies are single persons and gathering data through collecting a story that are using to construct a narratively about the individual experience and the meanings he or she attributes to them. Examples: what is experience of a veteran teachings who has been moved into administrative positions in her school? What does inclusions meanings are the specific need childhood to place a regular education classrooms, राइट। अब हमारे पास ये चीजें, पहले हमने ये देखा है कि क्वालिटेटिव डेटा क्या था, क्वांटिटेटिव डेटा क्या था, कि जब हमने क्वांटिटेटिव की बात की है तो हमारे पास करंट सिचुएशन से रिलेटेड चीज़ें आई हैं और वहाँ पे जो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स कलेक्ट हुए हैं, जबकि हमारे पास क्वांटिटेटिव में डाटा नैरेटिव होगा कि उसमें हम इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म में हमारे पास डाटा कलेक्ट होगा। Ethnographic purpose to obtain understandings to the shares, beliefs, and practice on the particular groups of cultures. Take for examples, what is the nature of a problem taken in content when they are being using a constructive approach to instructions after having taught using a very traditional approach of 10 years. When does a scene a failure parameters everything about the particulars of high school. Quantitative and qualitative methods, complementary natures of quantitative and qualitative approach, different purpose of research, explanatory, exploratory, considers of strength and weakness, different approach of specific purpose, quantitative versus qualitative research. Quantitative and qualitative research methods. The ultimate goal when choosing a design is to procedures of credible answers to the research questions. Research question drive to choice from the research design. These characteristics of research design suggest they will procedures more credible answers, specific types of research questions than the other designs, specific purpose, specific procedures, and for each design, very nice, specific purpose, specific procedures, and analysis of each design using of knowing, using of knowledge, examine of the following studies and categorize them to quantitative or qualitative. If quantitative categories them to descriptive, correlations, casual, comparative, explanatory, and single subject. If quantitative categories them narrative and ethnographic, right? Too much easy. Using your knowledge
thinking about Brown and Walbert's article as well as our article, where would you consider the first quantitative studies and the second qualitative studies? Why would you suggest the purpose of research article using 5 categories described by the authors of this text? Okay, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आपका कोई भी क्वेश्चन हो क्वालिटेटिव रिसर्च के हवाले से, क्वांटिटेटिव रिसर्च के हवाले से और रिसर्च बाय पर्पस, आपको मैं अगर सिंपल सा इसका ओवरव्यू दे दूँ कि हमारे पास किसी भी चीज़ को तलाश करना, वो कोई भी क्लास कर सकता है, जबकि रिसर्च होती है वो एक्सपर्ट्स रिसर्च कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि वेव्स ऑफ नोइंग, डिफरेंट वेव ऑफ नोइंग थी कि हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा उसको ओवरव्यू करवा देती हूँ ताकि आपको अपना लेक्चर्स के हवाले से बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। राइट, हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो हम टॉपिक कैसे सेलेक्ट करते हैं, किस तरह से डेटा कलेक्शंस करेंगे, फिर हमारे पास उसकी, हमने उसको कंक्लूड कर दिया था कि जो रिसर्चर होगा वो नॉर्मली एक्सपर्ट्स होगा, जबकि सर्च मेड बाय एवरीबॉडी। इसी तरह से हमारे पास जब कुछ हमने रिसर्च की टाइप्स देखी, साइंटिफिक मेथड्स देखे कि उसमें पर्सनल एक्सपीरियंस के ज़रिए हम सीखते हैं, हम अपनी रवायात के ज़रिए सीखते हैं, एक्सपर्ट्स अथॉरिटी के ज़रिए सीखते हैं। फिर हमारे पास कुछ लॉजिक्स होते हैं कि वो आसान से मुश्किल की तरफ या मुश्किल से आसान की तरफ आना। साइंटिफिक मेथड्स होते हैं कि हम चीज़ों को एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी स्टडी करवाते हैं, कि हमारे पास ट्रेडिशंस मेथड हैं और एक हमारे पास टेक्नोलॉजी के थ्रू टीचिंग्स हैं कि डिफरेंट हम साइंटिफिक मेथड्स लगा के अपनी नॉलेज को गेन करते हैं। इसी तरह से जब हमने बात की थी कि एजुकेशनल रिसर्च क्या है, इस रिसर्च के कुछ पर्पस, कुछ मेथड्स क्या होंगे, उसके पिलर्स की बात की। फिर इसके अलावा हमने कुछ इसकी डिफ़िकल्टीज़ की बात की कि हमारे पास कौन सी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, इसको किस तरह से मेजर किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन हमारे पास हुई कि इसके पर्पस क्या होंगे, मेथड्स क्या होंगे, बेसिक अप्लाइड एवेल्यूशंस एंड आरडी एंड एक्शनल रिसर्च हमारे पास इसके बेसिक पर्पस थे। फिर हमने बात की कि हमारे पास क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के हवाले से कि क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी होगी और क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन सी होगी, कि अगर हम डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में लेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च है, अगर हम इंटरव्यूज़ के ज़रिए डाटा लेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। जबकि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो एक ब्रॉड लेवल पे ली जाती है, एक आसान से, अगर क्वालिटेटिव रिसर्च को हम एक पर्सनल की स्टडी भी कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ की सूरत में हम उसको क्वालिटेटिव डाटा लेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन हम ऐसे करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप मुझे अपना क्वेश्चंस कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, या आप अपने माइक को अनम्यूट करें और अपने क्वेश्चंस पूछें, तो मैं आपको आपकी क्वेरीज को बेहतर तौर पर किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं उसका आंसर दूंगी। ओके क्लास, थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन, थैंक यू डियर ऑल। प्लीज़ आप एक दफ़ा ओवरव्यू कर लें खुद, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसरिंग का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा सेक्शन स्टार्ट होगा अब क्वेश्चन आंसरिंग का, तो हम डिस्कशंस करेंगे आपस में। राइट स्टूडेंट्स, प्लीज़ ज्वाइन फॉर दिस नेक्स्ट सेशन, क्योंकि अब हमारे पास जूम की मीटिंग एंड हो रही है, तो इस मीटिंग में हमारे पास ये लास्ट मिनट चल रहा है, तो हम अगेन ज्वाइन होते हैं और अपनी क्वेश्चन आंसरिंग का स्टार्ट करते हैं। ओके जी, थैंक यू।